Hello students, this video is for grade UKG. So let us start. We have three different sections in this sheet: English, Maths and EVS. So let us start with the first section, EVS. The question is, write the name of the things that you carry in school bag. In this, what you have to write the things name that you carry in school. आप अपने स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें ले जाते हो ये यहाँ पे आपको राइट करना है, लाइक नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर, वाटर बॉटल, टिफिन, ओके, लंच बॉक्स. ओके, यू हैव टू राइट दोज नेम्स. आप वो उन चीज़ों का नेम राइट करेंगे जो कि आप अपने स्कूल बैग में कैरी करते हो, अपने स्कूल बैग में रखते हो. ओके, what you will do, you will write the name of the things that you carry in school bag. अपने स्कूल बैग में जो चीज़ रखते हो उन चीज़ों के नाम यहाँ पे आप राइट करोगे. Now see the next section, which is of English. Write a picture composition. Write a picture composition. In this question, what you have to do is you have to write a picture composition. Okay, एक picture composition आपको यहाँ write करनी है on the basis of the picture. Picture के basis पे आपको यहाँ पे composition write करनी है. Means you have to write a few lines. आप एक picture देख सकते हो. ये picture कहाँ की है? एक पार्क की है. You can see it is a picture of a park. Okay, पार्क की पिक्चर है और आपको क्या करना है, आपको इसी पिक्चर के बेसिस पे कॉम्पोजिशन मीन्स आपको इस पिक्चर के बारे में राइट करना है. अंडरस्टूड? लाइक यू कैन सी देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द ग्राउंड इन द पार्क, देयर आर सो मेनी swings and sliders, benches are also available there. Okay, so you have to write about that कि पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है. और स्पेशली इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. तो आप पिक्चर मतलब पार्क में आप क्या करते हो, खेलते हो वहाँ पे क्या, और आप क्या क्या करते हो, पार्क से आपको क्या मतलब मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, ये सब आप यहाँ पे राइट कर सकते हो. ओके, यू हैव टू राइट ऑल अबाउट दैट. अंडरस्टूड? So everyone repeat with me one time. What we will repeat is letter A to Z with two words. Okay, दो words के साथ letter A to Z repeat करेंगे so that you will have a good vocabulary for these composition. इस composition को लिखने के लिए आपके पास एक अच्छी vocabulary हो जाएगी. Okay, सो ये कॉम्पोजिशन पहले आप कैसे राइट करोगे ये देखते हैं. आफ्टर दैट वी विल रिवाइज. लाइक यू विल राइट दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पार्क. देर आर सो मेनी ट्रीज एंड bushes in the park. These trees gives us oxygen and fresh air. There are so many swings and sliders to play with. ओके, बहुत सारे झूले हैं और बहुत सारे स्लाइडर्स हैं जिससे हम खेल सकते हैं, ये राइट कर सकते हो आप. एंड देयर आर बेंचेस ऑल्सो फॉर सिटिंग. वी कैन वॉक इन द पार्क एंड वी कैन टेक फ्रेश एयर. हम पार्क में वॉकिंग कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप राइट करोगे. ओके, now let us revise A to Z with two words. A for arrow. A for aeroplane. B for ball. B for balloon.
C for cat. C for cot. D for dog. D for doll. E for elephant. E for egg. F for fish. F for fan. G for grapes. G for gun. H for horse. H for house. I for ice cream. I for ink pot. J for jug. J for joker. K for kite. K for kennel. Kennel is a place where a dog lives. L for lion. L for lamp. M for monkey. M for man. N for nose. N for neck. O for orange. O for owl. P for parrot. P for penguin. Q for queen. Q for quilt. R for rabbit. R for race. S for swing. S for slides. T for trees. T for tiger. U for umbrella. U for uniform. V for van. V for violin. W for watch. W for well. X for Xmas tree. X for X-ray. Y for yacht. Y for yak. Z for zebra. Z for zero.
Okay, so this was all about English. Let's move to the next section, which is of maths. In this, we have to subtract and write. Subtract and write. हमें क्या करना है? Subtraction करना है और आंसर राइट करना है. Okay? You can do these on your fingers also. 7 minus 5. 7 minus 5. It will be 2. Very good. 8 minus 0. 8 में से 0 मतलब क्या? कुछ भी नहीं. 8 में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8. Yes, very good. 9 minus 5. 4. Yes, 9 minus 5 equals to 4. In this way, you have to do subtraction. Okay, you have to follow the subtraction. You can do these on your fingers also. आप इसको अपने fingers पे भी कर सकते हो. Okay, like जैसे कि जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, लाइक 7, 8, 9, 6, 8, 1, 4, ये नंबर जो दिया है, इतने आप फिंगर्स अपने हैंड में निकाल लो. कितनी फिंगर्स है? अगर 7 है तो 7 फिंगर्स टेक आउट करो, 7 फिंगर्स निकालो. 8 है तो 8 फिंगर्स निकाल लो. और फिर जो सेकेंड नंबर दिया हुआ, लाइक 7 minus 5, 7 में से 5 माइनस करना है. तो 7 फिंगर्स आपने निकाली, उसमें से 5 आप बंद कर लो. कितनी फिंगर्स बची? 2. So you will write the answer 2. Understood? In this way you can do the subtractions. So this was all about today's sheet. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.